dear students, Assalamu alaikum. I'm Muhammad Ashraf and you're watching Ashraf Kakar channel. Dear students, so we have discussed in detail in our previous lecture in part 1 about the ing as a gerund as well as a participle and with their respective parts. So in this lecture, we will be talking about the ing form in more than 30 usages. So its first usage, it says that when two actions are expressed or two actions or ideas expressed by one person, ठीक है, जब एक ही शख्स दो आइडियाज और एक्शंस को परफॉर्म कर रहा होता है, एक्सप्रेस कर रहा होता है, देन वी टेक द हेल्प ऑफ द आईएनजी फॉर्म एज अ पार्टिसिपल. ठीक है, देखिए, वी कैन नॉट यूज, that is a note you have to remember that we cannot use two main verbs at the same time in a simple sentence. हम एक वक्त पर, ठीक है, हम एक वक्त पर दो मेन वर्ब्स को एक ही सेंटेंस में, जो कि सिंपल सेंटेंस है, उसमें यूज नहीं कर सकते. ठीक है, एंड in order to that difficulty, in order to remove that difficulty, we take the help of the participles. Like for example, she was reading, eating. वो खाते हुए पढ़ रही थी. So here she was doing two actions. She was reading and at the same time she was also eating. ठीक है, तो हम दो sentences को एक मिलाने के लिए we take the help of the participle. She was reading, eating, and he says that he is sleeping, snoring. Again two actions. He is sleeping and snoring. So we remove and just take the help of the ing form, which is a present participle. He is sleeping, snoring. वो खराटे लेते हुए सो रहा है. ठीक है, then comes the second usage. Whenever the writer or a speaker says that doing of this thing is easy and doing of that thing is difficult. ठीक है, ये काम आसान है और वो काम मुश्किल है. ठीक है, जब easy, when we use the word easy and difficult in our sentences, we use the participle. For example, talking is easy but is optional in sentences. Either you can use or you cannot use, it's up to you. Talking is easy but doing is difficult. देखिए, बोलना आसान है लेकिन करना मुश्किल है. कहते हैं ना लोग, बोलना बहुत आसान है लेकिन करना मुश्किल है. So that's why we use talking is easy and doing is difficult. In the same way, insulting others or insulting is easy, but being insulted is difficult. So this is also the passive sentence. ठीक है, ताने देना या इंसल्ट करना बहुत आसान है लेकिन खुद इंसल्ट होना या खुद ताने सुनना बहुत मुश्किल है. ठीक है, and again it says that destroying is easy but building is difficult. तोड़ना, तबाह करना बहुत आसान है लेकिन उसे बनाना बहुत मुश्किल है. ठीक है, then comes the third usage. देखिए, like और dislike. देखिए, जब like और dislike की बात आ जाती है, then we use the participle or we take the help of the participle. For example, she likes helping poor people. ठीक है, वो गरीब लोगों की मदद करना पसंद करती है. She does not like teasing others. ठीक है, वो लोगों को ताने देना पसंद नहीं करती. So then we have the fourth usage of the participle or the ing form. Like for example, in the fourth usage, it said that whenever a writer or speaker says that doing of an action is a good or bad habit or is someone's hobby. देखिए, कोई भी action can be a good or bad. मतलब कोई action अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है. And sometimes that action becomes a hobby of someone. ठीक है, उसकी आदत सी बन जाती है, उसका मशगला बन जाता है. ठीक है, like for example it says that teaching is a scared profession. ठीक है, पढ़ाना एक डरावनी प्रोफेशन है. ठीक है, like for example then says smoking cigarettes is injurious to health. ठीक है, सिगरेट पीना वो मुअज्जिर सेहत है. ठीक है, you might have seen this sentence or signboards in public places. ठीक है, then comes the fifth usage. It says that whenever the writer or speaker says that he or she knows this and does not know that. ठीक है, कभी भी जब आप ये कहते हैं या लिखते हुए देखते हैं कि भाई आप एक काम करते हैं लेकिन उनमें से काम में से एक पार्ट आप जानते हैं और एक पार्ट नहीं जानते, तो इस सिचुएशन में आप यूज करते हैं पार्टिसिपल. लाइक फॉर एग्जांपल, शी नोज स्पीकिंग बट कैन नॉट राइट द चाइनीज कैरेक्टर. वो बोलना जानती है लेकिन चाइनीज कैरेक्टर which is of the Chinese writing script, लेकिन वो चाइनीज स्क्रिप्ट लिखना नहीं जानती. ठीक है,
Then comes he knew the English language. वो इंग्लिश लैंग्वेज जानता था, ठीक है, इट इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस. ही न्यू द इंग्लिश लैंग्वेज बट डिड नॉट नो टीचिंग. ठीक है, वो इंग्लिश लैंग्वेज जानता था लेकिन पढ़ाना नहीं जानता. ठीक है. अच्छा, यू कैन ऑल्सो चेंज दीज सेंटेंसेस बाई एडिंग अ वर्ड और फ्रेज नॉट नोइंग. सॉरी. आप इस सेंटेंसेस को बाय यूजिंग ऑफ नॉट नोइंग यू कैन ऑल्सो राइट. Like for example, if I say not knowing the Chinese character, not knowing writing the Chinese character, she left the blank. She she left the page blank. ठीक है. Or not knowing the writing, not knowing writing the Chinese character, she left the paper blank. ठीक है. नहीं जानती थी वो चाइनीज राइटिंग को, इसलिए उसने पेपर को ब्लैंक ही छोड़ दिया, खाली छोड़ दिया. और not knowing teaching, he changed his profession. ठीक है. और he left the English language teaching. ठीक है. तो आप not knowing को भी इसके साथ substitute कर सकते हैं. Then comes the sixth usage of the ing form. It says that whenever the writer or speaker asks that has or have you or anyone else ever seen any person or thing doing this or that action or thing. देखिए, जब भी राइटर या स्पीकर पूछता है या आप या कभी किसी शख्स ने किसी को या किसी चीज को कोई काम करते हुए या करते देखा है. ठीक है. अब देखिए, समझते हैं इसको एग्जांपल से. देखिए, हैव यू एवर सीन. देखिए, इसमें से दो चीजों का होना बहुत जरूरी है. वन है द स्पीकर और हैव एनीवन एल्स एवर एंड सीन का. ठीक है. These are the two important elements of this section. Have you ever seen or met the president? क्या आप कभी प्रेसिडेंट से मिले हैं या कभी आपने प्रेसिडेंट को देखा है? और फॉर एग्जाम्पल, if I say have you ever seen the rainbow after it is raining? ठीक है, आपने कभी बारिश के बाद रेनबो को देखा है? Have you ever seen him being caught in corruption? देखें, that is a passive sentence, so you can also use sentences in the active as well as in the passive form. Now, for example, क्या आपने उसे कभी करप्शन में पकड़ते हुए देखा है? So the answers for these type of the question, you can answer this. Yes, I have met the president. Yes, I have. या एक कंप्लीट सेंटेंस बनाने के लिए आप कह सकते हैं कि भाई yes, I have seen the rainbow. Yes, I have seen him being caught in corruption. So dear students, now we have the seventh usage of the ing form or the participle. It says that the writer or speaker says that if he sees or if he had seen anyone doing this or that thing, he will do or would have done like this. देखिए, इसमें राइटर या स्पीकर कहता है कि भाई अगर उसने किसी शख्स को कोई काम करते हुए देखा या उसने देखा होगा, ठीक है, तो वो he would have, ठीक है, तो वो उसके रिजल्ट में उसका रिस्पॉन्स देता या वो रिस्पॉन्स देगा इन फ्यूचर. लाइक फॉर एग्जांपल, इट सेज इफ आई हैड सीन हिम misbehaving his teacher, I would have slapped him. ठीक है. अब here we have used the participle that is misbehaving. ये कह रहा है कि भाई हमें, अगर मैंने उसे अपने टीचर को मिसबिहेव करते हुए देखा होता, I would have seen him. और if I had seen him, अगर मैंने उसे देखा होता अपने टीचर को या अपने टीचर के साथ मिसबिहेव करते हुए, I would have slapped him. मैं उसे मारता या उसे मार चुका होता. So it is the perfect form of the past tense. Then comes, so the next example says that if I see him smoking a cigarette, if I see him, अगर मैं उसे सिगरेट पीता हुआ देखता हूं, I will inform his father, मैं उसके फादर को इन्फॉर्म करूंगा. ठीक है. So here in this sentence it shows two responses. Then comes the eighth usage of the participle. Whenever the writer or speaker assures, the writer or speaker assures someone that he has advised
or the person understand. Now you will not see him, her or them doing the same work again. ठीक है, इसमें राइटर या स्पीकर कहता है, अश्योर करता है, यकीन यकीन दहानी कराता है कि भाई he has advised, कि भाई उसने किसी शख्स को एडवाइस किया है, उसे समझाया है कि भाई वो आइंदा ऐसा काम नहीं करेगा. ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल, सर प्लीज वार्न हिम, यू विल नॉट सी हिम चीटिंग अगेन. सर प्लीज वार्न हिम, सर उसे प्लीज वार्न हिम, उसे एक वार्निंग दीजिए. यू विल नॉट सी हिम चीटिंग अगेन, आप उसे वापस चीट करते हुए नहीं देखेंगे. देन नेक्स्ट एग्जांपल सेज पार्डन मी, माफ कीजिएगा, आई विल नॉट बी कमिंग लेट अगेन और नेक्स्ट टाइम. So we have used the participle in this sentence as coming as the cheating in this sentence. Then comes the ninth usage. It says that the right to a speaker says that he or she cannot or could not tolerate doing this or that thing or an action. ठीक है, अब कोई एक्शन द राइट ऑफ स्पीकर ये कहता है कि भाई वो कोई चीज बर्दाश्त नहीं कर सकता या बर्दाश्त नहीं करता, कोई एक्शन या कोई भी चीज either in present, on future or in the past. Like for example, she cannot stand waiting. ठीक है, वो इंतजार नहीं कर सकती. She cannot stand waiting. आप stand के साथ bear भी यूज कर सकते हैं. Then comes can they bear or stand working with us? क्या वो हमारे साथ काम करना बर्दाश्त करेंगे?